चेयरमैन आज जो बजेट है से बजेट रे किसी गोटे मुख्य चौड़ा को मुझे आपण को कहूँ चाहे ये जो बजेट गवर्नमेंट को अनुसार यहाँ गोटे इनक्लूसिव बजेट फॉर पुअर वुमेन यूथ एंड फार्मर्स से चार्टा ग्रोथ इंजिन रो कथा कहुई गोटे हूँ एग्रीकल्चर गोटे हूँ एमएसएमई इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट सबुथे किसी ना कि गुड़े प्रावधान रही जोटा कि ग्रोथ पाई ग्रोथ अभिमुखी हम प्रथम तो फार्मर कौन सी गोटे जो लोन रो सुविधा करा 1.7 करोड़ फार्मर से लाभवान हेबे सेमती बहुत गुड़िक स्कीम अच्छी इवेन आपणकर एमएसएमई रे एमएसएमई मानकर जो लोन टा 5 करोड़ थिला कोलेटरल फ्री लोन टा सेटा 10 कोटी को करा जायछि स्टार्टअप पाई किछिटा 27टा सेक्टर रे प्रावधान रखा जायछि थर्ड रे जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रे रहिछि सेमती इन्वेस्टमेंट शिप ब्रेकिंग हो आ विभिन्न मारिटाइम रे हो विभिन्न एरिया रे सेति गुडे मध्य किछिटा रहि जायछि एवं लास्टली होछि जोटा एक्सपोर्ट रे बेसिक कस्टम ड्यूटी जमती क्रिटिकल मिनरल हो किंबा ड्रग्स पाई कैंसर अदर पेशेंट मानक पाई हो 36टा सेक्टर रे रिड्यूस कराई बहुत गुडे एरिया रे 50टी सेक्टर रिड्यूस कराई बर्तमान आउ सबुठु मुख्य है जो सरकार आम मिडिल क्लास को पाई चिंतित ही बर्तमान ताको जो टैक्स को जीरो लिमिट को नो टैक्स को 5 कोटी रु 12 कोटी कर देचंदी सेटा निश्चय समस्त को पाई आम लोक आम समस्त को पाई निश्चय एटा गोटे आमे गवर्नमेंट को धन्यवाद देबू एटा कौन हम आमर कंजम्पशन बढ़िबो लोकों के हाथ में अधिका पैसा आसीबो तेणु बाइंग रे एटा अधिका अधिक लोक मान को सुविधा देव 5 लाख रु 12 लाख 5 लाख रु 12 लाख हो जाइए तेणु युड़िक जो जिनस बर्तमान दिगला यहाँ निश्चय ग्रोथ अभिमुखी हम विभिन्न सेक्टर आहरी बहुत किसी गुड़ा कहुई डिटेल एनालिसिस रे आपण जानी परिबा जेतेबेले फाइनल प्रिंट आसीबो तेणु मु भावुची एटा निश्चय आमर नेक्स्ट 5 वर्ष पाई जो सेटा प्रावधान करची नुआ को नुआ जिनस मध्य आसीबो एकदम एटा ग्रोथ अभिमुखी हम तेणु आमे मैडम निर्मला सीतारमण सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद देबू जे ग्रोथ पाई से माने आमर लोक मानक पाई चिंतित होई गोटे नुआ भल बजेट आनिछन मु ए बजेट को बहुत ट्रांसपेरेंट बजेट कहबी आ काहे की कहबी आपण जो हमर जो इमीडिएट हमर जो चेयरमैन साहब कहिले जे सबो सेक्टर रे आपण चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे एमएसएमई हो इन्वेस्टमेंट हो और एक्सपोर्ट हो आपण यदि प्रत्येक बजेट रो जो मैडम निर्मला सीतारमण जो बजेट स्पीच देले ताको यदि टिके टिके एनालाइज करबा भाबिबा ए सबो सेक्टर रे गोटे जिंस बहुत बहुत माने आखिया को आसी जो ट्रांसफॉर्मेटिव सेटा होची एम्प्लॉयमेंट 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 एंड एम्प्लॉयमेंट सबो सेक्टर रे आपण देखिबे जो जिंस सब हेची एग्रीकल्चर वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री MSCB the next largest employment in the country. Export also largest employment country. Investment जो तरह का कहले अपन जो new tech industries, clean tech industries, artificial intelligence, जो कि अपन service sector जोड़ा कि हमें also quite employment oriented. So if you look at that business, this budget, I'll give you full credit to this government for bringing out a very critical issue for our government, that was an employment. And I believe after the budget is implemented, this has created a lot many jobs, which probably can be calculated after some time in all the sectors that is said about. पहला जेतेबेला हम जॉब कथा कहूछु जेटा रोजगार कथा कहली आउ एबे जो सब दिया गला फॉर एग्जांपल मिडिल इनकम ग्रुप पई जो इनकम टैक्स रिलीफ दिया गला जोति पई ए भी एबे आपण सुनिले कि इनकम टैक्स रिलीफ जो दिया गला जो मानको सेथिरे सेमानकर टैक्स रिलीफ कमेला परे तांको हाथ रे तांको पॉकेट रे किछि जोटा कि स्पेंडेबल इनकम रोची जोटा कि कंजम्पशन भर्ती करी जोटा आपण जे कोनसी कंट्री रे आपण देखिबे कंजम्पशन बढ़िबो तो इकोनॉमी आल्सो इंडिसेस बढ़े
And this is one of the things that growth also will be ascertained because you have reduced a huge income tax burden on the middle income group. Plus, I can tell you the investment क्षेत्र रे जो government infrastructure कथा 1,45,50,000 crore provision for the people. Asset monetization fund monitoring तार सहित plus state सहित सेंटर भी सपोर्ट करी गोटे इन्वेस्टमेंट इंडेक्स करिकी जो मानकरे जोटा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो स्टेट गुड़ा को सेंटर विल हेल्प देम इन इक्वल मेजर्स टू गिव देम ए फंड for the infrastructure development. These are all some of the big, I tell you, transformative or you can say reformative budget by which the country will go live forward. At least this is what the budget indicate what we believe we could understand in the last few minutes. आपण देखिले एमएसएमई कहली आ स्टार्टअप जो कथा कहले स्टार्टअप पई जोटा आगुर 5 वर्ष तांगर स्कीम चला ताको 10 वर्ष बढ़ाइछन्ती रजिस्ट्रेशन से बेनिफिट तक मिलिबो. Our India is I think the second largest startup capital of entire world. I believe our India रे जो startup brain ecosystem हमरो government जो करूची हमरो जो जति की entrepreneur छोटे I mean young people are coming and starting the startup. It is a huge success story. I believe this budget will again increase the potential of startup ecosystem and also the number of startups and also surviving startups. Normally हम को startup रे गोटा हला पर तार decaying हुए and there is also a lot of startup live on the scenes. Now these are the schemes which will 5 वर्ष 10 वर्ष scheme will also allow them to sustain more. आ गोटे sustain हला पर ना ताका growth भी आगे को कासी. Actually अपन जो कहले एटा न्यू टेक्नोलॉजी रे हम EV और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आछी और सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री आछी जोथि पे हमको रॉ मटेरियल दरकार हम पाकर नाही और हमें तार अल्टरनेटिव डेवलप करिनु. आपण देखिथिबे गोटे जिनस मन रखंतु जेतेबेले गवर्नमेंट बहुत जो ईवी रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कम करूची ता सहित आप देखिए 10,000 रिसर्च फेलो इन डिफरेंट IITs गोइंग फॉर इन द रिसर्च ऑफ दिस. ये कंट्री कैन ओनली डेवलप नॉट ओनली रॉ मटेरियल फॉर द investment you make in the research so that it will go for a new tech industries, new age industry, new evolving industries. सेटा बहुत हेल्प करिवो हमर फ्यूचर जीवा पई. New age industry doesn't come just like investment, it will come with a lot of research faculty doing it. This is another big investment that doing it. critical mineral रो जो import करिवे plus nuclear energy को जो focus अछि सेटा पई निहाती और एनर्जी सेक्टर सेटा ग्रोथ को और प्रोपेल करिवो आगो को बढ़ाइवो. देखंतु एटा विभिन्न स्कीम अछि एटा होची आपनकर जदी आपण किछि सेव करिवेनी ताले टिकस दबा पड़ियो जेतोडा आपण स्टैंडर्ड डिडक्शन अछि सेविंग्स अछि विभिन्न प्रकार स्कीम रहिछि जदी आमे सेथिरे सेविंग करिवा ताले आपण को 12 लाख पर्यंत से दबा पड़ियोनी आपण जदी किछि न करिए ताले एगुडा को मिनिमम दबा पड़ियो जेतोडा फाइनल प्रिंट अछि हम जानि परिबा को स्कीम रे गले आपण को जणा दबा पड़ियोनी. आउ डायरेक्टर SR मिनमेट एई बजेट पर आमर तो महांती मिस्टर महांती और डॉक्टर महांती आमर चेयरमैन भी कहले दुई तीनटा एस्पेक्ट मु आ कहया को चाहूची. वन इज गोटे इज ऑफ डूइंग बिजनेस रे ए बजेट रे टिके थ्रस्ट दिया हेची जेमिति जो प्रोविजनल असेसमेंट पीरियड आगुरु इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाई की प्रोविजनल असेसमेंट होतला आ फाइनल असेसमेंट हो नतला सेटा रो वर्तमान टाइम फिक्स कर दिया है 2 वर्ष 2 इयर्स फाइनल असेसमेंट कंप्लीट हबो एक्सटेंडेबल बाय 1 मोर ईयर. एटा गोटे इंपोर्टर एक्सपोर्टर मानन को इज ऑफ डूइंग बिजनेस रे बहुत हेल्प करिवो तांको. गोटे सेकंड एस्पेक्ट होची ऑफ कोर्स पर्सनल इनकम टैक्स कथा कहले इज बिग रिलीफ टू द मिडिल क्लास ता ऊपर मु बेसी एलाबोरेट करिबिनी किंतु आउ गोटे जिंस से कहले ओडिशा इज ए मिनरल रिच स्टेट तेणु मिनरल सेक्टर ऊपर से गोटे कहते स्टेट मिनरल इंडेक्स गोटे कौन माइनिंग इंडेक्स एटा आम जाना को चाहिए सेटा कौन डिटेल रे किंतु माइनर मिनरल्स ऊपर थ्रस्ट दिया माइनर मिनरल ऊपर थ्रस्ट देले माइनर मिनरल इज ए स्टेट सब्जेक्ट काफी माने सेतरे विभिन्न प्रकार माइनर मिनरल्स डेवलपमेंट हेले स्टेट रो भी सेटा गोटे रेवेन्यू जनरेशन हो दिया ऑन द माइनिंग इंडस्ट्री कथा एटा. बिसाइड्स दैट आमर ये उड़ान स्कीम रे एयर कनेक्टिविटी कथा कहचंती नुआ नुआ एयरपोर्ट कथा कहचंती 120टा नुआ एयरपोर्ट हबो कहचंती. सो दिस इज आल्सो गिव ए दिस थिंग. टूरिज्म सेक्टर रे
कहबे हमर मनोज बाबू कहबे टूरिज्म सेक्टर रे भी सेमिति टॉप 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन को डेवलपमेंट करिया पई कुआइछि तो ओवरऑल आई थिंक देयर इज a very positive vibe and it is expected to spur growth and expected to meet the positive let us say intent of the budget of addressing unemployment reducing unemployment and all मु बजेट को टिके फर्स्ट बजेट ऊपर कहबी ओवरऑल बजेट ऊपर तापरे टूरिज्म विषय कहबी मोदी 3 गवर्नमेंट रो एटा फर्स्ट बजेट so during Modi 1 Modi 2 they bring lot of reforms कौन सी कंट्री रो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जीडीपी ग्रोथ पे few things are very important first is consumption probably 60% in India economy 60% demand consumption ऊपर डिपेंड करे सेटा सेति पई जतले जियोपॉलिटिकल इशू वाला इंटरनेशनली बीट यूक्रेन वॉर और बीट इन हमास द इजराइल वॉर India is not much affected because the demand and consumption is very strong in India. So India depend around 60% for the consumption. 30% next 30% is will come from the private investments. That includes your manufacturing and service and mining sector, all these sectors. The next 10% is from the government expenditure, capital expenditures. So these three way you can look at how the GDP will grow in a country. I think realizing all these factors, government has taken a right decision for giving boost to the middle segment. जोटा कि समानकर इलेक्शन कमिटमेंट भी थिला जो मिडिल क्लास मान they will improve the spend the surplus and affordable income for the middle class, so that will spend more money, which will increase the demand in the country, the consumption demand in the country. That they have done. They have did some changes in the income tax to see that there will be a surplus money in the hand of the middle class people. Besides that, I would see they divide in 5 categories like agriculture, your MSME, investment, export, and taxation. These are the 5 things. And moreover, the overall governance, they are continuously focusing to improve the governance system of each of the category. Although many schemes they have come up in previously, which is in pipeline, either it has been implemented fully or partly. That is continuing. Perhaps because of that, they are not reiterated those programs time and again. That is under implementation. Few programs and implementation and new things that they have declared in this budget, which my previous speakers already mentioned about that. I will not get into all those things. So far as investment is concerned, I am very happy for one thing. They are focusing on the people development. They are coming up with many schemes for the people development in the country, because India is the largely second largest population in the world. So if we will not give importance to the people development, employment, their social security and health care, so nothing will improve. So systematically they have given some scheme for that also. Especially for hotel or tourism. I'm coming to the hotel. And the hotel system it's a labor intensive sector. Definitely it creates employment for the country and also substantially nowadays it's so आजिकली tourism sector भी गोटे sizable amount GDP को contribute करे सेहिति पई जो स्कीम गुडा नुआ आसिला सेमाने वर्तमान डिसाइड करचंदी 50टा टॉप डेस्टिनेशन को फोकस करिवे. दैट इज ए वेलकमिंग स्टेप, गोटे भल स्टेप. यही टाइप रो जदी मॉडल डेस्टिनेशन डेवलप हबो, डेफिनेटली पीपीपी मोड रे मोर डेस्टिनेशन डेवलप हे परिबो. सेकंड, दे स्पोक अबाउट दिस थिंग एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ. सेइथरे भी जो ସେମାନେ जो कहिसेंती जे एम्प्लॉयमेंट जेहेतु इज द वेरी इंपोर्टेंट फॉर दिस सेक्टर, ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस सेक्टर, दे आर फोकसिंग ऑन द स्किलिंग पीपल. एंड आज पर्यटन सेक्टर रे एम्प्लॉयमेंट रो बहुत दरकार अछि, जोटा कि डिमांड एंड रिक्वायरमेंट इज वेरी लार्ज गैप इज देयर. सो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पई ସେମାନେ जो फोकस करछन फॉर स्किलिंग एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय मानकर ई सेक्टर पई, दैट इज अ वेलकमिंग स्टेप. Then they talk about the PLI for the destination management. So definitely the details, fine details will come. So this is something जोटा के incentive को लोगों को उत्साहित करिबा सेक्टर रे. And homestay actually हमारा जते कि
रूम दरकार पर्यटन को आगु को नापी वर्ल्ड वाइड जदि जति सब आसवे से बहुत गोटे गैप अच्छी सो होम स्टे को से प्राधान्यता देइचंती जो थे होम स्टे जदि इनसेंटिव दि जाए स्मॉल प्लेयर्स स्मॉल होम स्टे हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे टोटाल देशर टोटाली रूम संख्या बढ़ जो थे पर्यटन को उत्साहित कर